comprises 3/4 of the surface of our planet. Water. The water of our rivers, of waterfalls and streams as they flow into the mighty ocean. The water from man-made wells and canals and countless other sources. The ultimate medicine since time immemorial, clearing disease, offering health, yet becoming the source of ugly illness too. From the dawn of civilization, mankind has hailed its tremendous powers, prayed and sought its blessings and bounty. And this way or that, water or its lack has transformed lives. See that truth here. Villages in central Maharashtra, among the most drought-prone areas of the country, face a crippling water scarcity for a few months every year. Crops and lives come under threat. Thousands migrate away. Despite drought relief programs going back decades, little has changed. In these parts, agriculture remains largely rain-fed. Poor geopermeability means water retention is limited. Cutting down of forest and falling grain cover has made things worse. And what water is available is poorly managed. Groundwater resources are overexploited. Recycling is completely missing and wastage is common. Access depends on the deeper you can dig for it. And that's no solution. So large parts of the region are categorized, overexploited, critical or semi-critical based on groundwater availability. In this rain shadow region, amid all the despondency, there is a ray of hope at last. Hello, we are in Hiware Bazar, a village in Ahmednagar district of Maharashtra. Ahmednagar is one of the districts which was hit by drought in 2012. Hiware Bazar has a population of around 1300 people and it follows a careful plan of water conservation and watershed management. This plan has been central to the transformation of this village from a poor one to a prosperous one. We bring this special report for you. Hiware Bazar village is spread over 977 hectares in Ahmednagar district of Maharashtra in the foothills of Sahyadri mountain range. The village receives only 300 to 400 millimeters of rain a year. A steady degeneration of their land has meant degraded forests and little water available post the monsoon. No water for irrigation leads to rising migration numbers, and those staying behind cut trees for firewood and sustenance, adding to the problems. Preparation and sale of illicit alcohol becomes a source of income. Alcoholism and crimes were rife. Over 90% of the people here live below the poverty line. The village lacked basic medical facilities, and due to a bad reputation, teachers were unwilling to teach at the local school. So literacy rates remained at a miserable 30%, well below the national average. In short, the evils compounded themselves. In 1990, Popatra Pawar, a local youth, returned to Hiware Bazar from Pune after completing his M.Com. Deciding to give up a potential career in the city. He was elected Sarpanch. Under his leadership, the village drew up a water supply plan based on priorities set by the villagers themselves.
1991 proved to be a landmark year for Hiware Bazar. This village now boasts of maximum number of millionaires in rural India. There is safe water and sanitation for all. There is almost 100% literacy here compared to 69% national average rural literacy. There is a secondary school in Hiware Bazar and many students pursue careers in teaching and engineering. Development of watershed areas has been the key. The groundwater table has risen sharply and irrigated areas increased. भरत, ये आप कब से फूल उगा रहे हैं? ये बचपन से मेरे हमारे पिताजी बिगा रहे हैं। तो ये मुझे बताइए आप कि जब से यहाँ हिवरे गांव में पानी आना शुरू हुआ है, उसके बाद से जो पहले फसल उगा करती थी, उसके अलावा आप लोगों ने फूल उगाना शुरू किया है। हाँ। इसका क्या हिसाब है, क्या लाभ है, क्या करते हैं आप सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तो हिवरे बाजार में जल संधारण प्रकल्प चालू किया है ना, हाँ। उसका हमें बहुत फायदा हुआ। पहला पानी नहीं था, खेती ऐसे बारिश के करते थे हम, तो जल संधारण पानी आ गया, फिर ये झुंडू हो गया, सेवंती इधर सेवंती है, हाँ। वो ठिबक सिंचाई पे हम करते हैं। ये हम 8-10 साल से कर रहे हैं। As area under cultivation grew, cropping intensity increased and cropping patterns changed. Incomes too rose sharply. तो हफ्ते में कितनी आपको इनकम हो जाती है इससे? 1 लाख के करीब 1 लाख रुपए हफ्ता आ जाता है। किती महिन्याला किती कमवता तुम्ही असं दुधापासून पैसे? साधारण 30,000 रुपये होते महिन्याला। महिने का 30,000 रुपये। सब्जी बैंगन उगाते हैं, कोथिंबीर, मेथी, टोमेटो, फ्लावर, मिर्ची, पालक भाजी, भाजीपाला सब। The story of local resident Kashinath Kundiba stands out. A couple of decades back, he was a farm laborer who struggled to make ends meet. Today, he owns a sizable chunk of land and makes a decent living. The future looks good. पहले आप क्या करता था? उसमें क्या मुसीबत था? पहिलं शेती काम करत होतो, सुरुवातीला मजुरी जावं लागत होतं, तर मग हळूहळू नंतर थोडंसं गाया घातल्यानंतर मग थोडंसं घरचं काम करायला लागले थोडी। मग पहिलं आमचं 18 माणसाचं कुटुंब होतं, नंतर मग थोडीशी जमीन विकत वगैरे घेतली, 20-22 एकर जमीन खरेदी केल्यानंतर वाईल निघाल्यानंतर साधारण वार्षिक आता उत्पन्न आमचं साधारण एकाचं 6 लाखापर्यंत जातं। खर्च 2-1 लाख रुपये होतात मजुरीला, आणि सध्याचं उत्पन्न बरं आहे। म्हणजे सध्या काय एवढं 4-2 वर्षात पाऊसही बी एवढा काय फार होत नाही, पण ते पिकं होऊन जातात ना। कितनी कमाई होती थी? 6 लाखापर्यंत वार्षिक कमाई एक हफ्ते में वार्षिक कमाई कितनी? मजदूरी से कितनी कमाई करते थे जब मजदूर थे? मजुरी से मजदूर थे तो कितनी कमाई होती थी? तेव्हा 100-200 रुपये हजेरी राहायची, 4,000 रुपये 3,000 रुपये महिन्याला पडायचे। तो फिर किस दिन से आपने तय किया कि आपको ये सब करना है? शुरुआत कैसे हुई? अच्छे दिन होगी। पुरात हे पाणलोट क्षेत्र झाल्यामुळं थोडंसं पाणी सुरू झाले ना, पाणी आल्यानंतर थोडंसं गाया वगैरे घेतल्यानंतर खतं बितं मिळले, उत्पन्न वाढल्यानंतर मग थोडंसं डेव्हलप वाढल्यानंतर मग हळूहळू जमिनी घेतल्या, त्यावेळेस जमिनीचे भाव जरा कमी होते ना। Take a closer look at the challenge before residents of Hiware Bazar and how they overcame it. A watershed is a geographical area that drains to a common point.
In the normal case, rainwater that collects in a watershed would flow out along its natural drainage lines. But where forests and green cover have been destroyed, water gushes out too rapidly. This causes soil erosion and leaves little time for the water to percolate into the soil. So the watershed dries up again very quickly. That's where corrective human intervention has made the difference in Hiware Bazar. Watershed development refers to the set of measures taken to help retain water within a watershed area. These include soil and water conservation, afforestation, grassland development, and protection of biomass. Area treatment and drainage line treatment help hold rainwater for a longer time. This helps improve soil moisture and enables groundwater recharge. 90 कुएं थे और वो कुएं को बारिश हो गई तो पानी जनवरी फरवरी के बाद कुएं में पानी नहीं रहा। अभी देखो इस इतनी कम बारिश है जी, 200-250 मिलीमीटर बारिश हुई है अभी तक, फिर भी कुआं पानी से अभी भरा है। नाही कमी आहे ना, बाकीच्या गावापेक्षा आमच्यापेक्षा इतर गावाला पाणी कमी आहे ना, लेवल कमी आहे. कारण आमची पाणी वाहणारा पाऊस म्हणजे पुढं डबूक साचतच नाही, जागची जागा जिरल्या जातो पाणी. कारण हे पाणलोट क्षेत्रामुळं काय होतं, जागचं जेवढं पडलं तेवढं थांबतं, डोंगराचं पाणी तिथं थांबतं. त्याचा मग हा निचरा विहिरीला तातडीने एका आठवड्या किंवा 15 आठवड्याच्या आत लगेच येतात. जशी जवळजवळ असलं की एका आठवड्यात, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी असा बदल होत लगेच उपलब्ध येतो पानी. ये पीछे वाले ये मकान हम आप देख रहे हैं ना, ये पुराना मकान उधर था, ये अभी 7वीं कक्षा तक पड़ा है. 2 पोकलैंड मशीन उसके पास है. तो पहली जब शुरुआत हो गई लैंड लेवलिंग की, पहला ट्रैक्टर लिया उसने. लैंड लेवलिंग के बाद कुएं बनने शुरू हो गए, फिर कुएं को ब्लास्टिंग के लिए, तो फिर राजस्थान की टीम उसके साथ काम कर रही थी इधर. फिर कुएं बनना शुरू हो गया. तो उस वक्त अप्रैल मई में देखेंगे हालात, तो करीबन 80 से 120 फीट तक ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाती थी, इतनी खराब हालत थी. और आज हम देखेंगे तो 31 मई को अगर आप गांव में आ जाओगे तो हमारा बोर्ड लगा रहता है, एक बार हैंडपम्प को पंप करो और पानी पियो. अगर सेकंड प्रयास की ज़रूरत है 200 रुपये आपको गिफ्ट मिलेगा. On individual plots, farmers have leveled land and constructed low earthen barriers along the perimeter to hold rainwater within the fields. Wealthier farmers have dug plastic-lined ponds for additional surface water storage. The village has successfully brought together financing from different government schemes to achieve their conservation plan. Villagers initiated a joint management program with the Forest Department for watershed work on forest land. In Hiware Bazar, the Adarsh Gaon Yojana or AGY of the state government funded most treatments on non-forest land with a focus on watershed development. Funds were managed by an NGO, Yashwant Krishi Gram and Watershed Development Trust, set by the Hiware Bazar's Gram Sabha in 1994 as a precondition for AGY funds. Funds aside, a critical component of the Watershed Development Program has been voluntary service by the villagers themselves. One member from each family has stepped forward for what's been called Shramdan. गांधी जी ने जो कहा था कि गांव मजबूत करो, ग्राम स्वराज जो संकल्पना गांधी जी की थी कि सब लोग उसमें इकट्ठा हो जाएंगे, वो श्रमदान करेंगे, लोकल जो नॉलेज है उसका यूज करेंगे, हम सहमति से निर्णय करेंगे और एक गांव को आत्मनिर्भर बनवाएंगे. To ensure quality structures when government funding was inadequate, villagers worked voluntarily so that funds could be used to purchase good quality construction material. Also, there is a strong emphasis on maintenance. This again depends mostly on Shramdan and money donated by the villagers themselves. जब हम लोगों ने गांव ग्राम सभा में अनाउंस किया कि जो
अपने स्कूल के लिए खुद की जगह देगा उसको इंदिरा आवास का मकान मिलेगा। उस वक्त तो 12,000 रुपये सरकार देती थी इंदिरा आवास की मकान के लिए। तो फिर 4 लोगों ने हाँ कहा, फिर हम लोगों ने उनको पहले मकान दे दिया और बाद में जो उनकी बिल्डिंग थी इस श्रमदान से वो डिसमेंटल कर दिया। पत्थर का कंपाउंड बन गया और जो कीचड़ निकला, मिट्टी निकली, वो लेवल कर दी, ग्राउंड बन गया। फिर और 2 लोग, तो ऐसे बिल्कुल 18 लोगों ने अपनी जगह दी पुराने, और वही मकान बन गए। और अच्छे मकान जो गांव छोड़ के अपने फार्म हाउस में गए थे, गांव के लड़ाई झगड़े शराब से तंग आ गए, तो उनके भी पुराने मकान गांव में थे। तो स्कूल का पहला काम श्रमदान से इस तरह शुरू, और यही लोग हैं काम करने वाले। तो इन्हीं लोगों ने इतने लगाव से काम किया, हर घर से 4-4 लोग श्रमदान को आते थे। The watershed development program has yielded rich dividends to the area in the 2 decades of its existence. Between 1991 and 2014, the number of families below the poverty line has gone down from 168 to just 3. In the same period, the number of landless farmers had come down from 22 to 6. On the other hand, annual per capita income has increased in the area from 832 rupees in 1991 to 30,000 rupees in 2014. And literacy has risen from a meager 30% to 95% in 2014. Massive improvements have also been felt in groundwater levels and greater cropping intensity. आपका शुभ नाम? रामदास बाबा साहेब ठानगे। ठानगे जी, ये सारा कुछ आपका ही है। हाँ। तो हम एक आपसे कुछ बात करना चाहेंगे और पवार जी हमारे साथ में हैं। ये जो परिवर्तन आया है हिवरे बाजार में 72 में समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा थी, फिर पवार साहब आए वहाँ पर और इन्होंने एक मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो यहाँ पर जो है लागू की, जिसमें जन भागीदारी का सबसे बड़ा जो है सहयोग रहा है। उसका किस तरह का असर? साल में कुछ नहीं था, खाली एक साइकिल था। अभी वो सब परिवर्तन सब बदला ना, तो जैसा वो बोलेगा वैसा हम लोग सब करने लगा ना, तो कोई फेल नहीं गया ना, कोई फेल नहीं गया। वो अभी क्या वो सब क्या वो जिधर जिधर वो पहाड़ है उधर पानी अड़ाया ना, चारी बनाया, वो खेती में बांध डाला, सब जिधर जिधर है जगह उधर उधर सब पानी को रोक दिया। तो पानी को रोक दिया तो वो पर्कुलेशन हो के इधर बावड़ी में हमको बावड़ी भर गया। मतलब जैसे जो पानी ज़्यादा आता था पहाड़ी इलाके से, तो हर जगह पर उन्होंने क्या किया, बंदरे डाल दिया, मतलब पानी उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके थोड़े थोड़े पानी डिवाइड कर दिया। मतलब वो पानी दूसरे गांव में जाता था, जैसे टाकली खाद गाँव यहाँ पर 5 किलोमीटर है, उसी गाँव तालाब के अंदर पूरा पानी जाता था इसी गाँव का। तो अभी उधर इतना एक बूंद भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है कि जैसा 500 मीटर पर इन्होंने 500 मीटर पर बंदरे डाले हुए हैं, मतलब बंद कर दिया पानी जाने का। और जब ये भर जाते तो उसके अंदर का जो पानी है थोड़ा छोड़ देते, खालचे बंदरे में चले जाता है, फिर उसके नीचे वाले में जाता है। इससे क्या होता है, कुएं के लिए पानी ज़्यादा आता है। हाँ। तो कुएं के लिए पानी आने के बाद खेती के लिए पानी मिलता है। Manual, unskilled labor that was mainstay of the population earlier has transformed to focus on educated agriculture and the benefits that derive from this for life and living. प्याज तो अभी हर किसान के पास कम से कम 2 एकड़ से 10 एकड़ के आसपास प्याज होता है, लेकिन किसानों को पैसा मिल गया तो उसका और भी प्रोत्साहन बढ़ जाता है, उसमें से अलग अलग क्रॉप लिए जाते हैं। और वो लेने के बाद में अगर गवर्नमेंट उसे ज़्यादा पैसा दे देगी, जो बाहर से प्याज खरीद के लाके जहाँ 1 किलो को 50-60 रुपये रेट दे के खरीद लेते हैं, वहाँ अगर यहाँ किसानों को 30 रुपये भी रेट मिल गया तो किसान तो खुश हो गया, और भी क्रॉप ज़्यादा कैसे आएगा और क्वालिटी का कैसे आएगा, ये सोच के खेत में अपने काम करें। हमारे यहाँ पानी अड़ाने से हमारे खेत को पानी बहुत मिलता है, हमारे एरिया में पाणी आ जाता है बहुत। आणि आम्हाला जसे कांदे लावायला याला पाणी भरपूर राहतं, उन्हाळ्यापर्यंत प्यायला पण पुरतं, जनावरांना चारा पाण्याला पण पुरतं पाणी, भरपूर पाणी येतं पाणी अडवल्यामुळं।
आणि पहिलं असं पाणी बिणी पुरत नव्हतं ना, जनावरांना यांना करता नव्हते येत, आम्हाला गाय बिया पाळता नव्हते येत. वो आदमी पहले दूसरे के वहाँ फाल से With काम greater करता था. assurance of irrigation and hence lower risk, farmers have invested more in their land. Additional water storage structures have come up. Some families that migrated away have returned. इधर सब पानी का बंदोबस्त हो गया ना, बिजली का भी बंदोबस्त हो गया था। हाँ, और खेती भी अच्छी करने को चांस मिला हम लोगों को। पानी नहीं था इसलिए हम लोग वहाँ से गए थे, हमारे पिताजी वगैरह। जब इधर धरण हो गया पानी का, ये क्या बोलते हैं इसको, कर दिया था उन्होंने। तो फिर हम लोगों ने, हमारे पिताजी बोले अभी नहीं, इधर गाँव में खेती बाड़ी करेंगे, अपना गाँव अच्छा हो गया है। पंडित जी ने हम लोग को बहुत हेल्प किया है इसके बारे में। और हलो फिर हमको बावड़ी भी दिया उन्होंने। बावड़ी जो बावड़ी की वजह से अभी बावड़ी में बहुत पानी है, तो पानी की वजह से हम लोग ये खेती बाड़ी करने को शुरू कर दिया। पहले काल तो ऐसा ही था ना सर। तो आप लौटना चाहते हैं आप गांव में अपने? तो अभी बना रहे हैं ना, घर भी बना रहे हैं। लौट आएंगे आप? हाँ, बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना वो उधर रहेंगे, मिसेस हम और एक बच्चे इधर खेती करने के लिए आएंगे। Higher agricultural yields and earnings also means diversification. Many farmers have purchased cattle with their own money or with loans. The number of dairy cattle have risen to 650 today, from just 100 2 decades back. दूध का भाव हमारे यहाँ प्रति लीटर 25 रुपये है, हिसाब से हम दूध बेचते हैं। और हर दिन की कमाई 2,500 से होती है हमारे यहाँ। ये देखो, ये मक्के का है और ये काफी अच्छा ग्रीन पाउडर है, मेज। अच्छा, मक्के के बाद ये ग्रीन पाउडर यहाँ पे कैटल के लिए? हाँ, कैटल के लिए दो है। एक तो डेयरी जी, डेयरी के कारण क्या है, पैसा भी क्या है साथ में आता है। और नंबर 2 जी, जो काऊ डंक है वो खेत में जाता है, अच्छी खाद मिलती है जमीन। तो इस गांव में क्या गोचर नहीं है? नहीं, गोचर बिल्कुल बंद है। पहले 100% गोचर थे, करके जंगल का सफाया हो गया था, अभी स्टॉल फिडिंग है। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि गोचर बंद होने से जो अफॉरेस्टेशन है, हाँ, जो वो बढ़ गया, पेड़ों की संख्या है वो बढ़ गई। अच्छा, उनके बढ़ने से क्या लाभ है? उनके बनने से तो क्लाइमेट चेंज जो क्या अभी हालात देख रहे हैं ना, ये कारण इसमें तो पूरे गांव में, पहले आप पुराने फोटोग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल बंजर था, पेड़ भी नहीं दिखता था कहीं। तो यहाँ पंचायत के परमिशन के सिवा कोई एक भी पेड़ नहीं काटता। The revegetation program as part of watershed development has increased availability of good quality grass, which in turn means greater milk yields too. Up from just 150 liters a day in 1991 to a whopping 4,000 liters a day in 2014. The dairy and livestock sector is now an important mainstay of the economy here. Development, the saying goes, comes riding down the roads. Villagers have voluntarily donated part of their land for construction of these metal roads, directly or indirectly. All have benefited. Over the years, a collection of wretched eyesores metamorphosed into a model village. Prosperous, peaceful, and enlightened. The envy of neighbors and pride of the nation. लेकिन जो उनके गांव में हुआ है ऐसा हमारे गांव में होगा तो हमें और ही खुशहाली आ जाएगी।
जल मतलब जीवन है, वो तो सबको पता है, लेकिन जो अपना अपना काम छोड़ के सब जब एक होके काम करेंगे तभी वो सब आ सकता है, लेकिन कोई एक नहीं होता है, एक नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। The residents of Hiware Bazar learned their lessons the hard way, but they know now how to make most of them. Today they plow surplus earnings into fresh investments, expanding and diversifying at every step. Crops to dairy produce to floriculture and beyond. One more day gets over, but the fighting spirit and quest of overcoming impediments lives on in this miracle village.